Hello dear students, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kakar channel. Dear students, in this lecture we will be talking about the population planning, that how the population is controlled all over the world and what are the precautionary measures taken place in Pakistan. And in the last we will be looking into the Islamic teachings, what Islam says about the family planning. So here comes the population planning. Population planning can be defined as the structural way of taking actions to improve the lives of children, families and communities. ठीक है, पॉपुलेशन प्लानिंग वो होती है जहां पर बच्चों की, फैमिलीज की और कम्युनिटीज की जिंदगियों को देखा जाता है और उनकी जिंदगी को इंप्रूव किया जाता है ताकि वो अपनी लाइफ को सही तरह से गुजार सकें। जितनी डेफिशिएंसीज उनकी लाइफ में मौजूद हैं उनको गेट रिड आउट ऑफ ऑल दीज inequalities from the societies, so that people get better opportunities in cause of education, health and other facilities in their lives. So इसलिए ताकि लोगों को अच्छी लाइफ मुयसर हो सके, so they get a better family planning. So population planning can also be defined as the practice of artificially controlling the rate of human growth or the growth of human population. ठीक है, ऐसे जराए अपनाए जाते हैं आर्टिफिशियली तौर पर, ठीक है, बाय द ह्यूमन, सो दे गेट लेसर पॉपुलेशन. ठीक है, लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को अवेयरनेस दी जाती है ताकि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल की जा सके. So what is family planning? Family planning allows individuals and couples to anticipate and attain their desired number of children and spacing and time of their birth. Family planning इंडिविजुअल्स को मुनफरिद या इनफरादी शख्सियत को या कपल्स को, जो शादीशुदा लोग हों, ठीक है, उनको एजुकेट करती हैं ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक बच्चे पैदा करें. ठीक है, कम या ज्यादा उनको चॉइस दी जा सके. सेकेंडली, एक चाइल्ड के बाद दूसरी चाइल्ड में कुछ टाइम रखा जाए. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू गिव प्रायोरिटी टू द मदर हेल्थ. Then there are different scientific ways, the artificial methods that are used for the concept of contraception. Contraception word is used for the control of childbirth. There are many methods, so these 5 are major. First one is the long acting reversible contraception. ये long acting reversible contraception की जाती हैं for the term of 4 to 5 years. जब कोई शादीशुदा कपल होता है, they initially don't want to have their new ones do the reverse because they are confused or they are worried about their life, their career. So 4 to 5 years के लिए लोग जो है ना अपनी जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उनको कंट्रोल करने के लिए they get this method by the long acting reversible contraception, जहां पर दो तरह से वो अपने बच्चे रोक सकते हैं. One is the intrauterine devices. Intrauterine devices are those devices which are implanted inside the uterus of female. Then these uterus of female cannot give birth to the new ones. And the other way is the implantation of pills under skin, under the arms. ठीक है, डॉक्टर्स फीमेल के आर्म्स के नीचे कोई ऐसा पिल डाल देते हैं जिससे वुमेन की प्रेगनेंसी रोक दी जाती है. Then comes the hormonal contraception. Hormonal contraception is done by the artificial hormones known as progesterone and the estrogen. Progesterone is the female hormone while the estrogen is the male sexual hormone. So इन दो artificial hormones की वजह से जो natural hormones है, ठीक है, वो desired कम किए जाते हैं and they do not give birth to the new ones. Then comes the emergency contraception. Emergency contraception बाज़ औक़ात, and it is more prevalent in the Western countries, जहां पर लोग अपनी religious, अपनी cultural values को मद्देनजर किए बगैर, ठीक है, उनको पैसे पुष्ट रख के वहां पर लोग एक दूसरे से they get in relations, in physical relations, जिसकी नतीजे पर they got or female got pregnant. ठीक है, उनकी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए वो फिर इमरजेंसी कंट्रासेप्शंस के तरीके इस्तेमाल करते हैं, like in the shape of abortion. Then comes barrier methods. Barrier methods are also used somehow by the couples as well, or
couples or the unmarried people as well, they use different diaphragms, different items in order to get rid of pregnancy. And at last comes the permanent conception. Permanent conception is done by two ways. Male get vasectomy and female get tubal ligation. Vasectomy is a process in which the vas deferens, the doctor knows this term better, in that the vas deferens is the male sexual organ which where sperms are made. The doctor has sterilized this vas deferens so that the sperm may not ejaculate from the body. ठीक है, जब sperm body से ejaculate ही नहीं होते तो in the result there will not be the intercourse between the humans, and there comes the tubal ligation. In case in female, sometimes they get this tubal ligation by they get or clip or cut their fallopian tube which comes from the uterus to the external organ of the body. जो fallopian tube है जो uterus से body के बाहर आता है उनको क्लिप किया जाता है या तो काट दिया जाता है so that the sperm may not get itself into the uterus of female. अच्छा, इसकी benefits क्या हैं? Science has described, or the United Nations have given these such benefits of contraception or family planning. It says that it prevents health risk, female health risk. ठीक है, जिससे ज्यादा बच्चे हो जाते हैं उनसे फीमेल के हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है. Then comes reducing infant mortality. ठीक है, infant mortality वो होती है जब फीमेल अपने न्यू वंस को बर्थ देते हुए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और during the delivery, most of the mothers died. It comes helping to prevent AIDS or HIV. These are acquired immune syndrome. Deficiency syndrome is the virus which prevailing into the sexual organs of male and female. So जब प्रेगनेंसी ही नहीं होगी उनके रिजल्ट में, जब इंटरकोर्स ही नहीं होगा in between the humans, so people get rid of this virus as well. Then empowering people. ठीक है, देखें ये एक तासुर दिया जाता है मुआशरे में, जब बच्चे नहीं होते उनके सर पर बोझ नहीं रहती ताकि वो एक आजादाना अपनी लाइफ गुजार सकते हैं. सो पीपल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो औलाद को या जो न्यू वंस होते हैं, ठीक है, ज्यादा औलाद पैदा करना उनके लिए एक सर दर्द बने होते हैं. It's their own perception. अच्छा, रिड्यूसिंग द एडोलेसेंट प्रेगनेंसीज. बात ऐसे बच्चियां होती हैं जो उनकी अर्ली लाइफ में शादियां की जाती हैं, ठीक है, जब उनको एजुकेट नहीं किया जाता तो वो छोटी ही उम्र में उनकी लाइफ प्रेगनेंसी की वजह से लाइफ बिगड़ जाती है. अच्छा, रिजल्टेंटली जब ये तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, रिजल्टेंटली जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगी. नाउ विल लुक इनटू द इस्लामिक टीचिंग्स दैट व्हाट इस्लाम सेज अबाउट द फैमिली प्लानिंग. Either it is permissible or not. Either it is permissible to contracept or to control the birth of child or not. So Islam has for its jurisprudence the Quran, the Sunnah, the Ijma and Qiyas. These four Islamic jurisprudence which the whole Islamic world, which is of about 1.2 to 1.5 billion population of the world, they all are planning under the Islamic jurisprudence. So Islam considered the family as the basic unit of society. Islam family को, खानदान को एक सोसाइटी का, एक मुआशरे का बेसिक आंसर देता है. ठीक है, कि भाई सोसाइटी बनती है फैमिली से. जब फैमिली स्ट्रांग होगी तो तभी सोसाइटी उसके बाद स्ट्रांग कहलाई जाएगी. The Quran does not डायरेक्टली प्रोहिबिट्स कंट्रोल ऑफ बर्थ. देखें, अब इस आयत को लोग पकड़ के, ठीक है, अपने मर्जी के मुताबिक फैसले लेते हैं कि भाई कुरान में ऐसा वाज़ेह नहीं लिखा जहां पर ये कह सकें दैट द कुरान और अल्लाह द अलमाइटी हैज प्रोहिबिटेड द ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रोल चाइल्ड बर्थ. ठीक है, ऐसा डायरेक्टली कंट्रोल के बारे में नहीं कहा गया. अलबत्ता ये भी नहीं है कि आपने कंट्रोल करना है.
माज़ बिल्लाह, अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है. गॉड नोस ईच एंड एवरीथिंग बेटर देन एनीवन एल्स. ठीक है, लेकिन if we know, if we look into the Islamic jurisprudence, into the Sunnah of Holy Prophet peace upon him, and the Ijma and Qiyas, so by taking considerations into the Islamic jurisprudences, we get to know that there are certain ways where Quran has permitted, Allah has permitted human beings, because Allah says in the Quran, yuridu bikum Allah, yuridu bikum Allah, yuridu Allah bikum al-yusr, wa la yuridu bikum al-usr. ठीक है, is the ayah of Surah Baqarah, verse number 185. Allah says, Allah desires for you ease, Allah does not desires for you hardship. ठीक है, अल्लाह इंसान के लिए आसानी चाहता है, न कि इंसान के लिए मुश्किलात पैदा करे. इंसान अपने बंदे के लिए, अल्लाह हमेशा अपने बंदे के लिए आसानियां चाहता है. और ये आयत आप ये ना समझे कि इंसान को मर्जी दी गई है ताकि वो कर सके, फैमिली प्लानिंग कर सके, बल्कि ये आयत नाजिल हुई है फॉर द पर्पस ऑफ रमजान. रमजान के बारे में इंसान को छूट दी गई है. लेकिन हम इस आयत से ये समझ सकते हैं कि अल्लाह ने, बिकॉज इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ मॉडरेशन. ठीक है, इस्लाम एक जो मुसावात का मजहब है, बिकॉज इस्लाम गिव्स द लेसन ऑफ मॉडर्निटी, कि हम माशरे के साथ अल्लाह के कवानीन को अप्लाई करते रहें विद इन द इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस. सो अल्लाह नहीं चाहता कि कभी इंसान पर मुश्किलात आ जाएं. इसी तरह सूरह निसा में वर्स नंबर 28 में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह डिजायर्स टू लाइटन योर बर्डन बिकॉज फॉर मैन, बिकॉज वी स्टडी दैट इन इंग्लिश, बिकॉज फॉर गिव्स द मीनिंग ऑफ बिकॉज. फॉर मैन वाज क्रिएटेड वीक. देखें, अल्लाह ने इंसान, बिकॉज अल्लाह से इन द कुरान, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफथु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन. Allah has made man into pairs so that both gets tranquility from each other. ठीक है, अल्लाह ने इंसान को दो जोड़ों में पैदा किया है ताकि वो एक दूसरे से सुकून हासिल कर सकें, और ये सुकून इन द शेप ऑफ चानिका, इन द शेप ऑफ only one condition, which is the nikah. It is the Islamic way of confining two people, male and female, to each other. So, but Islam has some permissible conditions जहां पर इंसान कंट्रासेप्शन को प्रैक्टिस कर सकता है. अगर कोई रिस्क हो, अगर हेल्थ रिस्क हो, ठीक है, जहां पर मदर की या इन्फेंट के हेल्थ को, बच्चे के हेल्थ को, ठीक है, लाइफ का रिस्क हो, ठीक है, उसकी मौत का रिस्क हो, या उसकी हेल्थ का, मदर की हेल्थ का रिस्क हो, तो उस शर्त में वो रोक सकते हैं अपने न्यू वंस को. देन टू अवॉइड शॉर्ट टर्म्स, शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ बर्थ. ठीक है, बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई लोग अनअवेयरनेस की वजह से, अन एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन इतनी नहीं होती कि भाई, और दे डू नॉट नो अबाउट द अवेयरनेस इन ऑर्डर टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंट्रासेप्शन. उनकी शॉर्ट इंटरवल्स पे ही चाइल्ड बर्थ होती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाती है. इन द लास्ट, अवॉइड ट्रांसमिसिबल डिजीज. ऐसी डिजीज हैं या जेनेटिक डिजीज होती हैं क्या जिनका खदशा रहता है कि उनकी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में वो बीमारियां फैल न जाए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनवायरमेंटल साइंस. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.